ये देखिए, right now we will talk about filters. In Power BI we have majorly 3 filters. एक है filter on this visual, दूसरा है filter on this page, तीसरा है filter on all pages. Okay, majorly we have 3 filters. What is the use of this each one? अभी यहाँ पे filters में what is the filters you are seeing? You are seeing filters on this page and filters on all pages. दो ही दिख रहे हैं, but I am saying I have 3 filters. So third filter कब आएगा? When you select any visual, then only it will appear. Okay? जब आप कोई filter को select करोगे, at that time only the filters on this visual will be appearing. अगर नहीं करोगे, it will not be appearing. Okay? You will see only 2 filters. One is filter on this page, another one is filter on all pages. When you select any particular visual, then only you will see a filter called filters on this visual. Okay, we will have 3 filters now. Clear, guys? Online? Yes, sir. Right. So what is the use of? For example, मैं ये जो numbers दिखा रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, कंज्यूमर का 1.16 मिलियन है, कॉर्पोरेट का 0.71 मिलियन है, होम ऑफिस का 0.43 मिलियन है, राइट. दिस इज द ओवरऑल सेल्स, राइट. पूरा कंज्यूमर सेगमेंट ने इतना सेल्स जनरेट किया है, पूरा कॉर्पोरेट सेगमेंट ने इतना जनरेट किया है, राइट. बट मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे? आई वांट टू सी ईस्ट रीजन का सेगमेंट सेल्स क्या है, ओनली ईस्ट रीजन का. ये जो सेगमेंट है, मतलब कॉर्पोरेट है, कंज्यूमर है, दिस कंज्यूमर बिलोंग्स टू ईस्ट ऑल्सो, वेस्ट ऑल्सो, नॉर्थ ऑल्सो, सेंट्रल ऑल्सो. ये जो कॉर्पोरेट के जितने सारे कस्टमर्स है, कुछ लोग ईस्ट से है, कुछ लोग वेस्ट से है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजन दे आर देयर, राइट. आई डोंट वांट टू सी द ओवरऑल डेटा, मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा दिखाना है, सिर्फ इसी विजुअल में, बाकी सब ऐसा ही रहना है. ऑन टॉप ऑफ वन विजुअल ओनली आई वांट टू अप्लाई ए फिल्टर विच इज रीजन इज ईस्ट. Requirement is clear online? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Vandana, Abhilipsa, Chinmaya? Yes, sir. Yes, sir. Right. Huh? Huh? ये भी एक विजुअल है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो ए विजुअल. आपको विजुअलाइजेशन में आपके पास एक स्लाइसर विजुअल है, ठीक है. ये स्लाइसर विजुअल लूंगा और यहाँ पे आई विल सिलेक्ट दैट रीजन. रीजन को डालना है ना, सो रीजन डाल देगा. आई विल टॉक अबाउट स्लाइसर लेटर. स्लाइसर में और भी बहुत कॉन्सेप्ट्स है. व्हेन आई टॉक अबाउट स्लाइसर्स आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स. ओके, नाउ sorry, I have one question here. yes. So filter is selling filters on this page, filters on all page. The page what we are considering as a page. This is a page. This is called a Okay. page. Page 1 is a page. Page 2 is another page. Okay, okay, okay. Okay, we will talk this one. I am talking about filter on the visual now. Okay, I will come to filter on page later. So now on a particular visual, I want to apply a filter called region is equal to east. मतलब इस एक विजुअल में मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा दिखाना है, बाकी सब में सब कुछ दिखाना है, बस एक विजुअल में मुझे ईस्ट रीजन का डेटा दिखाना है. दैट इज द रिक्वायरमेंट. So what I will do, I will select the visual, I will go to the filters pane. Okay, visual select करके मैं filters pane में जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, filter on this visual. मुझे एक ही विजुअल, इस विजुअल पे ही filter अप्लाई करना है. So I will use this one, filter on this visual में add data fields here, right. So यहाँ पे मैं क्या करूंगा, I will take the region field and put it here, ठीक है, and then select east. तो अभी जो डेटा दिख रहा है, दिस इज ओनली रिलेटेड टू ईस्ट रीजन. ओके, मुझे अगर ईस्ट और वेस्ट दोनों का डेटा दिखाना है इस विजुअल में, देन आई विल सेलेक्ट ईस्ट एंड वेस्ट. देन वट एवर द डेटा यू आर सीइंग नो, दिस बिलोंग्स टू बोथ ईस्ट एंड वेस्ट रीजन. ठीक है. Yes, sir.
Sir, in this, how we will get to know which one is east, which one is west? It is not showing that name also in east west, na? माई रिक्वायरमेंट इज नॉट दैट वन, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बनाना है। अगर आपको बोलना है कि कौन सा ईस्ट है कौन सा वेस्ट है, देन यू नीड टू गो विद अ डिफरेंट विजुअल। ठीक है, Okay. अगर So आप the बोलोगे कि मुझे ईस्ट कौन सा है वेस्ट कौन सा है दिखाना है, देन आई विल गो विद अ टेबल चार्ट मे बी, एंड हियर आई विल ड्रॉप द रीजन हियर, सो आई विल सी ओनली ईस्ट रीजन का ये है, वेस्ट रीजन का ये है। Right here I am showing only east and west now because I am filtering this. If I remove this one, then everything I will see. okay. But in the chart, it is showing the total numbers, no, sir? Because my requirement is to show only total number. I am not distinguishing between east and west there. Okay. अगर मेरा requirement होता जहां पे east west भी दिखाना है, then I will select a different visual. Okay. Okay. So it all depends कि आपका requirement क्या है, आपको क्या दिखाना क्या है, आपको overall value दिखाना है ईस्ट वेस्ट रीजन का, या फिर ईस्ट का क्या है वेस्ट का क्या है अलग अलग दिखाना है। अगर अलग अलग दिखाना है, then you need to go with a different visual. Following? Yes, sir. Yes, Right. sir. Right. So right now I wanted to show only ईस्ट रीजन डेटा इन दिस विजुअल। टाइटल को मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा इंस्टेड ऑफ सेइंग सम ऑफ सेल्स, व्हाट आई विल से ईस्ट रीजन सेल्स बोल दूंगा, so that people can understand this data is showing only east region data. Yes, sir. Right. Okay, I am just showing how to apply a filter on a particular visual. उसके बाद रिक्वायरमेंट अलग होता है तो यू नीड टू डू द चेंजेस अकॉर्डिंगली। एक पर्टिकुलर विजुअल पे आपको अगर फिल्टर अप्लाई करना है, then you need to select the visual, you need to go to filter, and then you need to add the column here, and then you need to select whatever you want to filter. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे ईस्ट रीजन का सेल्स दिखाना है सेगमेंट वाइज, एंड ऑल्सो शिपिंग मोड शुड बी, फॉर एग्जाम्पल शिपिंग मोड शुड बी फर्स्ट क्लास, ओनली फर्स्ट क्लास का ही दिखाना है मुझे। मतलब क्या है, ईस्ट रीजन का कंज्यूमर जो सिर्फ फर्स्ट क्लास को ऑप्ट किया था, उनका सेल्स क्या है। So what I will do, again I will select this one, visualize filters on this visual, and I will select the shipping mode. शिपिंग मोड को लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा और यहाँ पे बोलूंगा सिर्फ फर्स्ट क्लास का दिखाओ। So now I have two filters applied on a single visual. यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं हम लोग, Who are the consumers, मतलब टोटल कंज्यूमर जितने लोग हैं उसमें भी ईस्ट रीजन के कितने लोग हैं, उसमें भी फर्स्ट क्लास शिपिंग मोड सेलेक्ट करने वाले कितने हैं, उन लोगों का सेल्स क्या है। यस नो? Yes, sir. सो यू कैन ऐड मल्टीपल फिल्टर्स हियर। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट का दिखाना है, होम ऑफिस और कंज्यूमर नहीं दिखाना है, सिर्फ कॉर्पोरेट का दिखाना है, तो मैं सेगमेंट जो है उसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा और बोलूंगा सिर्फ कंज्यूमर का दिखाओ। मुझे दो चीजें दिखाना है, so I will select two. So basically everything whatever you want to filter on top of one particular visual, that will be done on under filters on this visual. एक पर्टिकुलर विजुअल पे अगर आपको मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करना है, then you will go with filter on this visual. Is that clear? Yes. Yes, sir. Yes, no? Yes, sir. Okay, so filters on of this visual का काम क्या है, this impacts the selected visual only. बाकी कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, राइट? हम कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. Right. Now I will go to the second filter, which is called filter on this page. तो इसके नाम के हिसाब से क्या होना चाहिए,
पूरा पेज फिल्टर होना चाहिए। फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. Yes. मैं अगर ये फिल्टर्स हटा देता हूँ, वी कैन कीप इट ऑल्सो, नॉट ए प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल रीजन का हटा देता हूँ, फर्स्ट क्लास का ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। नाउ इस एंटायर पेज में मुझे सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा दिखाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस पेज बिलोंग्स टू ओनली ईस्ट रीजन। ओके, इसका मतलब क्या है, इस पेज के अंदर जो भी दिखाऊंगा सब कुछ ईस्ट रीजन को ही बिलोंग होना चाहिए। टोटल सेल्स ईस्ट का दिखाना है, टोटल क्वांटिटी ईस्ट का दिखाना है, टोटल प्रॉफिट ईस्ट का दिखाना है, लाइक दिस एवरीथिंग आई शुड शो ओनली ईस्ट रीजन। यू कैन कम हियर एंड सेलेक्ट द रीजन एंड यहाँ पे अगर मैं रीजन सेलेक्ट करूंगा एंड से ईस्ट, इट विल शो ईस्ट। ऐसे ही हर एक विजुअल के ऊपर आप कर सकते हो, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको पूरा पेज में अप्लाई करना है एक एक करके कुछ फायदा नहीं है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन Time गो विथ space. फिल्टर्स ऑन दिस पेज, ठीक है। फिल्टर्स ऑन दिस पेज पे जाके यू कैन क्लिक, यू कैन ब्रिंग द रीजन एंड से ईस्ट, तो मेरा एंटायर पेज विल बी फिल्टर्ड। स्लाइसर हो गया, जो भी है इस पेज के अंदर सब कुछ ओनली ईस्ट रीजन का डेटा ही दिखाई देगा। If I say east and west, it will show only east and west data in the entire page. दूसरे पेज में it will not impact. For example, यहाँ पे मैं region wise सेल्स करता हूँ। ओके, रीजन वाइज सेल्स अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे मैंने ईस्ट रीजन अप्लाई किया, बट यहाँ पे कुछ फिल्टर नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है, राइट। दूसरा पेज में इंपैक्ट नहीं होगा। अगर कुछ भी हम फिल्टर ऑन दिस पेज अप्लाई करते हैं, दैट विल इम्पैक्ट ओनली दैट पेज ओनली। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ आई ऐड सम मोर थिंग, मे बी आई विल से सेगमेंट हो गया, रीजन हो गया, फॉर एग्जाम्पल सिटी, आई विल से ओनली बिलोंगिंग टू दिस सिटी। इस सिटी के अंदर व्हाट इज द ईस्ट रीजन सेल्स, दैट ओनली ईस्ट और वेस्ट रीजन सेल्स इट विल शो। So ये जो सिटी है, it doesn't belong to east or west region. This will belong to some other region. That's why we do not have any sales here. Okay. So basically multiple filters if you want to apply on a particular page, you need to come under filter on this page और यहाँ पे आप कोई भी filter apply कर सकते हो. Okay. जैसे region हो गया, I want to show for example region का filter रहने दो. For example again I want to apply shipping mode. You will just bring the shipping mode and say what shipping mode you want. So accordingly all the data will be filtered. ठीक है। So what I am trying to tell you here, अगर आपको एंटायर पेज के ऊपर आपको कोई फिल्टर्स अप्लाई करना है, then you will come under filter on this page. Is that clear? Yes, sir. Right. Now I will remove this filter. आपको रिमूव करना है तो क्या करना है, यहाँ पे क्लियर फिल्टर है ना, जस्ट क्लिक ऑन क्लियर फिल्टर, दैट्स इट। और आपको कोई भी कॉलम आप यहाँ पे ला सकते हो। इट इज नॉट लाइक 1-2 कॉलम, you can add 100 filters also, but generally we don't add in real time, we will add maybe 2-3 maximum, but if you want to add multiple filters you can do it. आप जितना भी ऐड करोगे यहाँ पे और एक नया बॉक्स आएगा जहां पे इट विल से ऐड डेटा फील्ड्स हियर। ओके, राइट। नाउ द थर्ड वन इज फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। ऑल पेजेस का मतलब क्या है? जितने भी पेजेस हैं सबके ऊपर लगे। करेक्ट, एवरी पेज, मतलब रिपोर्ट लेवल, मतलब इस रिपोर्ट में जो भी है जितने भी पेजेस है सब कुछ फिल्टर होंगे। तो फॉर एग्जांपल फिल्टर ऑन ऑल पेजेस के अंडर में मैं रीजन को डालता हूं, ओके, एंड देन आई सेलेक्ट ईस्ट। So what is happening in this page? This particular page, it is showing east region data. But if I go to the other page also, here also it will show only east region data. ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, ईस्ट और वेस्ट चाहिए मुझे, so it will impact in other page also. अगर मैं एक नया पेज बनाता हूँ और उस पेज में मैं रीजन को डालता हूँ, यहाँ पे भी ऑलरेडी इट विल बी अप्लाइड। ठीक है। ऑल पेजेस में अगर मैं कोई भी फिल्टर अप्लाई करता हूं,
it will be impacted to the entire report. ओके कभी कभी क्या होता है ब्लैंक्स होते हैं तो यू वांट टू रिमूव ब्लैंक्स इन द एंटायर रिपोर्ट तो आप क्या करोगे वो कॉलम को यहाँ पे डालोगे यहाँ पे जो ब्लैंक है इसको डिसेलेक्ट करोगे बाकी सब सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा हर एक पेज में से ब्लैंक्स हट जाएंगे okay so this filters can be used in multiple ways if you know the concept you can use it in multiple ways अगर एक पर्टिकुलर विजुअल के ऊपर आपको फिल्टर अप्लाई करना है then you will go with विजुअल लेवल फिल्टर फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल अगर आपको एक एंटायर पेज पे अप्लाई करना है On page. ऑन Filter. पेज फिल्टर ऑन दिस पेज एक पेज के ऊपर अगर करना है देन फिल्टर ऑन दिस पेज अगर ऑल पेजेस एंटायर रिपोर्ट के ऊपर करना है देन यू विल गो विद फिल्टर ऑन ऑल पेजेस इज द डिफरेंस क्लियर Yes, sir. okay filter on this visual को sometimes people call it as visual level filter ठीक है this is also same filters on this page को sometimes people call it page level filter filters on all pages को sometimes people call it as report level filter clear Yes, sir. right now inside each filter there are some sub filters filter type होते हैं जैसे कि बेसिक हो गया एडवांस्ड हो गया टॉप एंड ओके वी हैव 3 सब टाइप्स अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इसके ऊपर लेट अस रिमूव दिस वन ऑल पेजेस वाला इफ यू सी फिल्टर ऑन दिस विजुअल यहाँ पे जो हमारा डायमेंशन है उसके ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन के ऊपर जब क्लिक करूंगा ये जो दिख रहा है ये बेसिक फिल्टर है अभी तक हमने जो किया था वो बेसिक है जो चाहिए बस वही दिखाई देगा राइट दिस इज कॉल्ड बेसिक फिल्टरिंग but we have something called advanced and top end also ठीक है बेसिक वन नॉर्मल चेक बॉक्स आएंगे जिस जो जो चाहिए उसको सेलेक्ट करना है बस उतना ही देन वी हैव एडवांस्ड एंड टॉप एंड का मतलब क्या होता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 15 या 16 सब कैटेगरीज है ईच सब कैटेगरी का सेल्स दिखा रहा हूं फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 सब कैटेगरीज है ठीक है I will show all 100 but end user is not interested in seeing all 100 उसको क्या देखना है मुझे सिर्फ टॉप के 10 प्रोडक्ट 10 सब कैटेगरी दिखाओ जहां से मुझे ज्यादा सेल्स आ रहे हैं ओके फ्रॉम वेयर आई एम गेटिंग मोर नंबर ऑफ सेल्स so what I will do I will select the visual मुझे बस इस फिल्टर में ही टॉप 10 दिखाना है राइट तो जिस विजुअल में मुझे टॉप 10 दिखाना है दैट विजुअल आई विल सेलेक्ट and then go to visual level filter then I will select the top end okay मुझे टॉप कितने दिखाने हैं 10 so I will put 10 here अगर मुझे टॉप 7 दिखाना होता so I will put 7 here okay based on what value based on sales के जो मुझे कौन है ऐसे 7 सब कैटेगरीज जो मुझे ज्यादा सेल्स डाल रहे हैं तो यहाँ पे फैक्ट कौन सा है व्हाट इज द फैक्ट Sales, sir. sales is a fact so that fact value you need to drop it by value okay based on what you want to show the top 7 that you should put it here and then apply filter तब हमें only the top 7 product subcategories only it will show if I say top 5 it will show only top 5 ठीक है क्लियर Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इसको मैं हटा देता हूं फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शो यहाँ पे हम विजुअल में क्या दिखा रहे हैं
विजुअल में क्या दिखा रहा है? ये सेल्स, सम ऑफ सेल्स, सेल्स बेस्ड ऑन सब कैटेगरी। प्रोडक्ट सब कैटेगरी का सेल्स दिखा रहे हैं। बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? आई वांट टू सी द टॉप 5 सब कैटेगरीज विच आर जनरेटिंग मी हाईएस्ट प्रॉफिट्स। ओके, वैल्यूज यहां पे सेल्स का ही आएगा, बट टॉप 5 कौन सा है जो कि मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट दिखा रहा है? देर कुड बी ए सिचुएशन जहां पे टेबल्स मेरा सेल्स है टॉप 5 के अंदर है, मगर प्रॉफिट्स टेबल से इतना ज्यादा नहीं आ रहा है। मुझे ज्यादा प्रॉफिट फॉर एग्जांपल पेपर से आ रहा है, तो पेपर मुझे ऊपर दिखाना है। फॉलोइंग और नॉट? फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 है, 3 प्रोडक्ट है। इसका सेल्स और प्रॉफिट है। इसका सेल्स फॉर एग्जांपल 100 है, P2 का सेल्स फॉर एग्जांपल 50 है, P3 का सेल्स फॉर एग्जांपल 120 है। बट प्रॉफिट P1 मुझे प्रॉफिट ला रहा है 70, P2 मुझे प्रॉफिट ला रहा है फॉर एग्जांपल 80 फॉर एग्जांपल, और P3 मुझे प्रॉफिट ला रहा है 60। हो सकता है, राइट? मुझे क्या दिखाना है? आई वांट टू शो टॉप प्रोडक्ट एंड इसका सेल्स। बट वो जो प्रोडक्ट जो टॉप 1 फर्स्ट रैंक में है, जिसका प्रॉफिट से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, देन व्हाट विल बी माय रिजल्ट? प्रॉफिट सबसे ज्यादा किसका है? इसका है, राइट? तो माय रिजल्ट शुड बी दिस वन, टॉप 1 प्रोडक्ट विच इज गिविंग मी हाईएस्ट प्रॉफिट। This should be my result. Even though my sales are highest for P3, but my highest profit is P2. Following? Yes or no? Yes, sir. तो सेम चीज मुझे पावर बीआई में दिखाना है। यहाँ पे मेरा सेल्स दिखा रहा है बेस्ड ऑन सब कैटेगरी, बट मुझे क्या देखना है? टॉप 5 सब कैटेगरीज विच आर जनरेटिंग मी हाईएस्ट प्रॉफिट्स। तो क्या करूंगा? सेम टॉप एंड पे जाऊंगा, टॉप 5 को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्या डालूंगा? Based on what value I want to show the top 5? Based on profits. Even though Okay. here we are showing sales, but I want to filter based on profits. So I will use the profit column here. So these are my, देखो पेपर टॉप 5 में आ गया, बट एक्चुअली पेपर का सेल्स टॉप 5 में नहीं है। पेपर का सेल्स टॉप 5 में नहीं है, इट इज एट द बॉटम समवेयर। बट even though the sales are less, it is giving me more profits. ठीक है? Yes or no? So what you need to understand here is based on what value you want to show the top 5, top 3, whatever, that you should put it here. It is not based on the value you are showing. Based on what value you want to show the top values, that value you need to put it here. Is that clear? Yes, sir. ठीक है? Similarly, अगर आपको bottom 5 दिखाना है, you will change from top to bottom. So it will be the bottom 5 products which are giving me the lowest profits. टॉप और बॉटम दो अलग अलग होते हैं, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यू नीड टू सेलेक्ट। क्लियर? यस नो? Yes. तो बेसिक और टॉप एंड दोनों क्लियर? सब फिल्टर्स? Yes, sir. Now I will remove this filter. Now we have something called advanced filtering. Okay, advanced filter में क्या होता है? For example, I will take a different example. Instead of सब category, I will take product name. Okay, मेरे पास बहुत सारे products हैं। मुझे क्या करना है? I want products which are related to Apple. यहाँ पे कुछ कुछ products है which are related to Apple. Okay, Apple company related phones बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर मुझे उसको सेलेक्ट करना है, कैसे करूंगा मैं? वन बाय वन I cannot keep on scrolling. No, it will be very difficult, and if I do also, there will be high chance of doing mistakes.
तीन चार है तो जैसे रीजन 4 है उसमें से ईस्ट सेलेक्ट करना आसान है, बट मेरे पास प्रोडक्ट्स 1000 है, उसमें से आई वांट प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू एप्पल। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एप्पल 10, दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है 10 देन एप्पल, this is also Apple product, this is also Apple product only, there is something A B C D and then Apple, this is also Apple product, मतलब अलग अलग तरीके का नेम्स है। तो आई वांट टू फिल्टर, सिर्फ जहां जहां एप्पल है उसको ही फिल्टर करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो विथ एडवांस फिल्टर। तो मैं क्या करूंगा, एडवांस फिल्टर में जाऊंगा, बोलूंगा शो आइटम्स व्हेन द वैल्यू कंटेन्स एप्पल। अगर एप्पल है नाम में कहीं पे भी, बस उसी को दिखाओ मुझे। राइट, so whatever the products it is showing, no, everything is related to Apple. This one also देखो इतना बड़ा नाम है, लास्ट को लिखा है एप्पल आईफोन 5C करके। राइट, सो by using advanced filtering I can specify, I can give some rules। मैं उसको बता सकता हूं कि show items when the value contains Apple। अगर मुझे सिर्फ एप्पल आईफोन 5 को या फिर 5C को फिल्टर करना है, ओनली एप्पल आईफोन 5C, देन मैं क्या बोलूंगा, इंस्टेड ऑफ कंटेन्स आई विल से इज क्या बोलूंगा मैं, एप्पल आईफोन 5C या 5S जो भी है, तो इट विल ओनली फिल्टर दैट वन। इज मतलब एग्जैक्ट मैच, ठीक है। कंटेन्स मतलब जो भी नाम हो, अगर ये वर्डिंग्स उसके अंदर है, शो मी दोस थिंग्स। तो इसमें भी है लास्ट को एप्पल आईफोन 5C करके। राइट, so I can specify some rules, I can say contains, I can say does not contain। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, does not contains, so I can say does not contains Apple 5C करके। तो जहां जहां एप्पल आईफोन 5C नहीं है, एवरीथिंग it will show। if I say does not contain Apple, so other than Apple all other products it will show। ठीक है, so it depends on what rule you want। you say does not start with or starts with, I will say starts with Canon for example। जो जो प्रोडक्ट का नाम कैनन से स्टार्ट होता है वो ही दिखाई देगा। राइट, सो यू कैन स्पेसिफाई सम रूल्स हियर। दो रूल्स आप स्पेसिफाई कर सकते हो, एक है यहाँ पे और एक है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल। so I will say starts with Canon and contains Canon। so दोनों रूल जहां पे सेटिस्फाई होगा वही दिखाई देगा। एंड और का डिफरेंस क्या है, what is the difference between and or? For example, I have east, west, north, साउथ। मैं अगर बोलता हूं ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, अगर मैं बोलता हूं दिस इज द सेल्स। ओके, इफ आई से ईस्ट का सेल्स क्या है, व्हाट यू विल से 20। वेस्ट का सेल्स क्या है 30। इफ आई से ईस्ट और वेस्ट, what will be the reason, what will be the answer? Any If one I of the ask you, two. what is the answer? Either east or either west it I will need the be. number। ईस्ट का ये है, वेस्ट का ये है, नॉर्थ का ये है, साउथ का ये है। व्हेन आई से ईस्ट और वेस्ट, व्हाट नंबर शुड कम हियर? 30. हाउ मच? 30, sir. 30। एनी अदर आंसर्स? Maybe 20 or 30, any of them. ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई एक नंबर होगा ना। 20 और 30 का मतलब क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट आई शुड गेट हियर? 20. Either if
Highest wise then 30, lower wise the then number 20. बोलो बस उतना है, समझाओ मत. 20. Any other answers? Sir, 50. 50. Any other answers? That's it. Okay. If I say east and west, now what should be the answer? 50. 50. 50. Any other answers? No other answers? So Zero. the answer is east or west जब बोलूंगा you will get 50. East and west जब बोलूंगा you will Zero. get blank. Zero भी नहीं आएगा, blank आएगा. ओके, एक सेल दो जगह पे नहीं हो सकते. एंड मतलब बोथ शुड सैटिस्फाई. एक ही सेल दोनों जगह अगर होता है देन ओनली इट विल बी ईस्ट एंड वेस्ट, जो कि इम्पॉसिबल है. ईस्ट और वेस्ट मतलब क्या है, वहां पे होने से भी चलेगा, यहां पे होने से भी चलेगा. तो अगर यहाँ पे है उसको भी कंसिडर करो, अगर यहाँ पे है उसको भी कंसिडर करो, दोनों को कंसिडर करो. You need to remember one thing, same column पे you cannot apply and condition. On a same column you cannot apply and condition, it will throw you blank. For example, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं if I take region, okay, and say advanced filtering is east and दूसरा condition is west and then apply, you will not get any result. ठीक है, सेम कॉलम के ऊपर you cannot put and condition, it will throw blank. But if you say और, क्या होगा, उसका भी डेटा लेगा, इसका भी डेटा लेगा, ईस्ट का भी देगा, वेस्ट का भी देगा. Following? Yes, sir. Okay. So that is about advanced filtering. Advanced filtering में you can give two conditions with and or condition. Okay. So basic हो गया, just use the checkbox. Advanced हो गया, give two conditions based on and or. टॉप एन हो गया, शो टॉप और बॉटम बेस्ड ऑन ए फैक्ट वैल्यू. ओके, तो यहाँ पे जो आपने बेसिक और एडवांस सीखा है एग्जैक्टली सेम विल बी देयर इन अदर टू फिल्टर्स आल्सो. फिल्टर्स ऑन दिस पेज में भी होगा, फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस में होगा. ओनली डिफरेंस है, अगर वो आप यहाँ पे अप्लाई करते हो इट विल अप्लाई टू द एंटायर पेज, अगर वो यहाँ पे अप्लाई करते हो इट विल अप्लाई टू द एंटायर रिपोर्ट. ये जो टॉप एन है दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन फिल्टर्स ऑन पेज एंड फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस. फॉर एग्जाम्पल इफ अगर मैं फिल्टर ऑन ऑल पेजेस में जाता हूँ आई विल नॉट सी द टॉप एंड फिल्टर हियर. ओके, इफ आई गो टू फिल्टर ऑन दिस पेज ऑल्सो you will not see the top end filter, only basic and advanced only will be there. Okay, because it doesn't make sense. आप top end filter पूरा पेज पे अप्लाई नहीं कर सकोगे, यहाँ पे top end sales कैसे दिखाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, right? So top end will be applicable only to a particular visual. Clear? Yes, sir. Okay, any questions? We have little more to cover in filters that I will cover in the next class, but whatever we discussed today are very important with respect to filters. Okay, you need to know everything whatever we discussed about filters.
विजुअल लेवल फिल्टर कैसे काम करता है, पेज लेवल फिल्टर कैसे काम करता है, ऑल पेजेस रिपोर्ट लेवल फिल्टर कैसे काम करता है, उसके बाद सब फिल्टर्स क्या है, एडवांस कैसे काम करता है, बेसिक कैसे काम करता है, टॉप पिन कैसे काम करता है. These things you should be clear. Okay, I will try to give some assignment today, maybe by afternoon or something, and tomorrow we will take a break and try to practice whatever we have discussed till today. Is that fine? Yes, no? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So any other questions, comments, feedback before I close for today? Sir, if we go through back the videos, the link is not opening. Not able to hear properly. If we go back to the videos after some time to watch the what you taught to us, so the link is not functioning properly. Okay, video, it is not showing up, you are saying. The link is not working properly. That they will fix it today. I will talk to them that they will fix it. Yes, sir. Thank you. Recorded video चाहिए ना, वो private आ रहा था, that they will fix it. I will talk to them today. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay. So tomorrow we don't have class, right, sir? Tomorrow you don't have class. Tomorrow you need to do practice. I will share you some assignment. Maybe I will give you a document with requirements. Accordingly, you need to build a report based on the same data. I have provided you the data already, right? Yes. Yes, sir. Superstore data. Sorry? Superstore data. Superstore. Yeah. Same data. I will give you some different requirement. अभी तक हमने जो सीखे हैं, based on that, I will give you some requirement. Try to build that one. Okay, sir. Okay. Okay then. I'm closing for today. Thank you, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah.